This program is powered by MLBD Research and Resource Foundation, initiated by Motilal Banarsidass Publishing House and Good Weather. नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल एंटरप्राइज स्पेशल प्रोग्राम सीकिंग द एनलाइटनमेंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हर रविवार सायंकाल 6 बजे ये प्रोग्राम आपके समक्ष हम लेकर उपस्थित होते हैं और इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को गीता उपनिषद के जरिए, गीता उपनिषद के माध्यम से हमारे भारतीय वांग्मय को समझने समझाने का ये क्रम हम चलाए हुए हैं। और इस महती क्रम में, इस महती यज्ञ में आहुति देने के लिए हमारे साथ आज भी हैं, नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज के प्रोफेसर श्रीमान रामनाथ जी झा हमें नई दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ होंगी गुजरात बारडोली से हर ग्रेस स्वामिनी सदविद्यानंद जी सरस्वती। साथ ही हमें मुंबई से ज्वाइन करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के सीनियर एडिटर रहे हुए ख्यातनाम कॉलमनिस्ट, प्रख्यात कॉलमनिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से श्रीमान विठल जी नाडकर्नी। और हमारे साथ होंगे भारतीय मूल के, इन दिनों अमेरिका निवासी, प्रख्यात प्राध्यापक, एमिनेंट प्रोफेसर श्रीमान अनिल जी भाटे। और साथ ही बेंगलुरु से हमें ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट श्रीमान श्रीराम जी दर्भा। और साथ ही पिछले एपिसोड में हमारे साथ गेस्ट अपीयरेंस देने वाले हिज ग्रेस स्वामी मित्रानंद जी हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं एज ए रेगुलर पैनलिस्ट। और स्वामी जी ये हमने पिछले एपिसोड में सुना है, हालांकि वो गेस्ट अपीयरेंस थी, तो उतना हम पूरे जो डायमेंशंस हैं एक डायनामिक संत की तरफ से जो आने चाहिए थे वो अब आपको सुनने को मिलेगा, अब आपको उसका भी लाभ मिलेगा। तो हमारे साथ ये पैनलिस्ट हैं और हम इनका स्वागत करें। इससे पहले आज के एपिसोड की एक संक्षिप्त जानकारी हम आपके समक्ष रख देना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त गीता उपनिषद का अध्याय 13 हम चलाए हुए हैं, चैप्टर 13, और इसमें श्लोक संख्या 6 से 11 आज विवेचित होने वाले हैं, श्लोकास 6 to 11। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का ये जो अध्याय है, ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है गीता के। हालांकि गीता उपनिषद अपने आप में हर एक श्लोक, हर एक शब्द उसका बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे वांग्मय की दृष्टि से यदि हम देखें तो प्रस्थानत्रयी का एक प्रमुख ग्रंथ, एक प्रमुख शास्त्र गीता उपनिषद माना जाता है। तो हमारी सनातनी परंपरा के शास्त्रों का जो परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है, वो है ज्ञान, ज्ञान कराना, ज्ञान करना। क्योंकि बिना शास्त्र पढ़े, बिना इस वांग्मय परंपरा को पढ़े व्यक्ति अज्ञानी रहता है। तो ज्ञान और अज्ञान का ये जो भेद है वो भगवान श्री कृष्ण आज के अपने उपदेश में अर्जुन को बहुत ही सरल तरीके से बताने वाले हैं और बतला रहे हैं। इसलिए आज का एपिसोड बहुत ही सारगर्भित है। हालांकि आज के इस बाजारू और भौतिक चकाचौंध के इस दौर में ज्ञान की ये बातें किसी भी व्यक्ति के लिए, आमतौर पर हम बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, सो आमतौर पर जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये स्थूल रूप में यदि हम देखें, मोटे तौर पर यदि हम देखें तो अव्यवहारिक हो सकते हैं, या कि हम इसको कह सकते हैं अप्रासंगिक हो सकते हैं। व्यक्ति मानते हैं इस तरह से कि इन बातों का हमसे क्या लेना देना, हमारी लाइफस्टाइल से क्या लेना देना, क्योंकि भौतिक युग है, बाजारू युग है, ओपन मार्केट का ज़माना है, ओपन मार्केट इकोनॉमी का ज़माना है, और चीज़ें दिखाई देती हैं, भौतिक वस्तुएं दिखाई देती हैं। ऐसे में ये जो बातें हम जो चलाए हुए हैं, इनको लेकर व्यक्ति एक वितृष्णा का भाव रख सकता है। हालांकि अब ये दौर बदलता हुआ दौर है, हम जिस दौर में हैं अब ये बदल रहा है और लोग ज्ञान परंपरा की तरफ, ज्ञान की तरफ आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, क्योंकि कांच के टुकड़े में और तलाशे हुए रत्न में जो अंतर है वही वास्तविक और अवास्तविक ज्ञान में भी है, यानी कि ज्ञान और अज्ञान में भी है। तो जो अज्ञान की परछाई में जी रहे हैं उनको तलाशना जरूरी है। तो क्या है असली ज्ञान जो भगवान हमें बतला रहे हैं, इसे समझने के लिए अब हम हमारे विद्वान पैनलिस्ट के पास चलते हैं। नाउ विदाउट अ फर्दर ड्यू वी वुड लाइक टू वेलकम आवर एस्टीम्ड पैनलिस्ट। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर श्रीमान रामनाथ जी झा, हिज ग्रेस स्वामी श्री मित्रानंद जी, और श्रीमान विठल जी नाडकर्नी, प्रोफेसर श्रीमान अनिल जी भाटे, प्रोफेसर श्रीराम जी दर्भा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार, मोस्ट वेलकम। तो जैसा कि प्रोग्राम की रवायत है, ट्रेडिशन है, हमारे आज के जो विवेचित होने वाले श्लोक हैं
अध्याय 13 के चैप्टर 13 के श्लोका 6 to 11, श्लोक संख्या 6 से 11। पहले इनका रिसाइटल होगा, इसके बाद प्रोग्राम की शुरुआत होगी। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः। अर्जुन उवाच महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्। आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कारमेव च। जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु। नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जन संसदि। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और हमारे पैनलिस्ट को भी और हमारे सभी व्यूअर्स को भी हम बधाई देना चाहते हैं कि आज का जो एपिसोड है वो 108वां एपिसोड हमारा है। हम 108वां एपिसोड आज कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अब प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और झा साहब के पास चलना चाहेंगे। झा साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। स्वामी जी को प्रणाम। और पिछले 2 संडे नहीं आ पाया क्योंकि अपना जो संविधान है उसका जो अमेंडमेंट्स है उसका संस्कृत में अनुवाद हो रहा था, तो उसको फाइनल करना था। तो अपना संविधान संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी 3 में है। तो संस्कृत का संविधान अब कंप्लीट हो गया, तो वही उसी कार्य में लगा हुआ था। इसके लिए संपूर्ण देशवासियों को बधाई कि हमारा अब संविधान जो है वो हमारी मूल भाषा संस्कृत में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। और इसके जो कारक तत्वों में एक तत्व हैं वो आपके सामने विराजमान है। जी जी जी, तो जी जी, सभी को शुभकामना, क्योंकि ये बहुत को पता नहीं है कि संस्कृत में भी पूरा संविधान उपलब्ध है। तो आज के जो विषय हैं उसके आधार पे जो 6ठा श्लोक है उसमें वस्तुतः भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि इच्छा आदि जो गुण है वो न्याय दर्शन में उसको आत्मा का गुण कहा गया है, लेकिन वेदांत में और जो वैदिक ज्ञान की परंपरा है उसमें उसे जो संसार है, भौतिक जगत है, उसका गुण कहा गया है। तो इसी को लेकर के, क्योंकि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ईश्वर, यही 3 विषय लेकर के पूरा अध्याय है। और क्षेत्र जो है वो संपूर्ण भौतिक जगत है, तो भौतिक जगत का ही गुण है ये। इसको भगवान बताते हुए कहते हैं कि इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरितम। कि मैं सबसे पहले क्षेत्र का जो धर्म है, क्षेत्र के जो गुण है उसको मैं बताता हूं। और उसमें सबसे पहला है इच्छा। इच्छा वो वस्तु, वो गुण है जो चीज हमें अच्छी लगती है उसको बार बार पाने की जो हमें एक तरह से लालसा बनी रहती है, वो इच्छा है। और जो वस्तु एक बार हमें अच्छी लगती है और उसको यदि वो न प्राप्त हो तो उसके आधार पे जो दुख होता है, उसको उसके आधार पर जो क्रोध इत्यादि होता है उसको द्वेष कहते हैं। और सुख और दुख तो अनुकूल जो कुछ भी हमारे विषय में होता है वो सुख होता है, भौतिक जो विषय है उससे संबद्ध। और जो प्रतिकूल होता है वो दुख होता है।
इसी प्रकार संघात चेतना धृति, संघात जो है वो जो पांच भौतिक शरीर है और उसमें इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि का जो सामूहिक रूप है उसको संघात कहते हैं। और चेतना जो उस क्षेत्रज्ञ का जो प्रतिबिंब है, जो उस ईश्वर तत्व का प्रतिबिंब है, इस रूप में जो अंतःकरण में वृत्ति बनती है, अंतःकरण में जो एक तरह से फंक्शनैलिटी आती है, तो उसी आभास रूप को यहाँ चेतना कहते हैं। और धैर्य है जो किसी भी परिस्थिति में, वो दुख हो सुख हो, उसमें एक जैसा शरीर इंद्रिय इत्यादि को बना करके रखना, वो धृति है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि जो भौतिक जगत है उनके ये सारे गुण हैं, ये सारे गुण आत्मा के गुण नहीं होते। तो इसको मैं ठीक से बता रहा हूं। और इसके बाद भगवान कहते हैं कि जो क्षेत्रज्ञ है, तो क्षेत्रज्ञ को कैसे जाने, तो क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए आप में कैसे गुण होने चाहिए, आप में कैसा जो व्यक्तित्व का विकास हो, इस दृष्टि से अगले श्लोक में कहते हैं कि अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम, कि व्यक्ति में कभी भी अपना बड़प्पन दिखाने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़प्पन दिखाना जो है वो वस्तुतः आपको उस क्षेत्रज्ञ से दूर ले जाता है और आपको उस शुद्ध चेतन तत्व की ओर जाने नहीं देता। तो इसीलिए जो अमानित्व है उसके विपरीत आप में कभी बड़प्पन का भाव नहीं होना चाहिए। दूसरा अदम्भित्वम, जो अपने को बार बार अपने गुणों का बखान करना, इस प्रकार की जो चीज है वो अदम्भित्व है, मतलब ना करना अदम्भित्व है। यदि हम करते हैं तो फिर हम भौतिक जगत में अधिक हम प्रवेश करना चाहते हैं। अहिंसा का अर्थ ही है कि मन वाणी और शरीर से किसी के बारे में नकारात्मक ना सोचना, किसी का अहित ना करना। और उसके साथ ही आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना, क्योंकि अपने वैदिक परंपरा में आचार्यवान पुरुषो वेद, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में ऋषि कहते हैं कि आचार्य से युक्त व्यक्ति ही उस तत्व को जान सकता है, क्योंकि ये तो गुरु से ही, क्योंकि ये गुरुमुखी विद्या भी है और गुरु के अनुभव से ही यह आप उस अनुभव के धरातल पे जा सकते हैं। इसीलिए गुरु की उपासना हो, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं कि गुरु की उपासना हो तो ब्लाइंडली हो, परिप्रश्नेन सेवया, जो पहले भगवान बोले हैं। तो गुरु की उपासना भी हो, गुरु की सेवा भी हो, लेकिन गुरु से आपकी जो जिज्ञासा है उसकी पूर्ति भी गुरु के माध्यम से ही हो। तो इस प्रकार से आचार्य का बहुत अधिक महत्व है। हम वेद में जानते हैं कि आचार्य के मुख्य 3 विषय बताए हैं। आचार्य कस्मात, यास्क ने निरुक्त में कहा है कि आचार्य आचारम ग्राह्यति, आचार्य वो होते हैं जो बच्चों को नैतिकता सिखाते हैं। पहला काम आचार्य का ये है। आचिनोति अर्थान, आचार्य वो हैं जो नए नए ज्ञान, नए नए विज्ञान को स्वयं भी जानते रहते हैं। और तीसरा है कि आचिनोति बुद्धिम, और जो भी शिष्य हैं उनमें उस ज्ञान को ले जाते हैं, उनको उससे प्रशिक्षित करते हैं। तो ऐसे आचार्य जो हैं उसकी उपासना की बात सतत कही गई है। शौच से तात्पर्य है कि आंतरिक और बाह्य, हम सब समझते हैं कि शरीर विकारवान है तो उसमें विकार होता ही रहेगा, तो उसकी स्वच्छता पे बहुत ध्यान देना चाहिए, और इसीलिए इसकी बात पूरी परंपरा में आई है। और मन का भी शुद्धिकरण होते रहना चाहिए, आचार्यों से, संत से, महात्माओं से अच्छे विचार को जानना, अच्छे ग्रंथ का अध्ययन करना। इसीलिए अपने यहाँ कहा है कि जो हमेशा अपने शास्त्र का प्रतिदिन कुछ न कुछ अध्ययन जरूर करना चाहिए, जिससे मन की शुचिता बनी रहती है। और स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, और हमें स्थिरता रखनी चाहिए। स्थिरता का तात्पर्य है कि जो कठोपनिषद में कहते हैं ना कि कश्चित धीरः प्रत्यगात्मान में, जो संसार का जो वातावरण है उस वातावरण में हम देख ही रहे हैं कि दुनिया में कैसी कैसी घटनाएं चल रही है, तो उसमें मन को स्थिर रखते हुए उस
परम तत्व की ओर अग्रसर होना सदैव, ये स्थिरता है। और आत्म विनिग्रह है कि जो शरीर है उस शरीर को सदैव सन्मार्ग में लगाना, सदैव सन्मार्ग में लगाना, कभी भी इस शरीर का प्रयोग किसी गलत कार्य के लिए न करना, ये आत्म विनिग्रह है। और इसके बाद भगवान आगे कहते हैं कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यानी जो इंद्रियार्थ है, इंद्री का जो विषय है, उन विषयों में आपका वैराग्य हो। वैराग्य क्यों हो? क्योंकि वो अनित्य है। वैराग्य क्यों हो? क्योंकि वो सतत विकारवान है। इसीलिए आपको इन सब का चिंतन करते हुए उससे डिटैच्ड रहना चाहिए, उसमें बहुत आसक्ति ना हो, और अहंकार राहित्य होना चाहिए। अहंकार का मतलब ही है कि अपने को डिलिमिट करना। आप बाकी पूरे ब्रह्मांड से अपने को अलग करके शरीर के रूप में अपना प्रदर्शन, ये अहंकार है। तो यह सबसे बड़ा बाधक तत्व है उस परम तत्व तक पहुंचने का। तो अहंकार रहित होना चाहिए। और फिर सदैव जन्म मृत्यु, जो कैसे जन्म हमारा हुआ, कैसे माँ के गर्भ में 9 मास तक हम रहे, कैसे हम जन्म लिए, किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मल मूत्रों में हम से हमारा रहता है, उससे जुड़ाव रहता है, कई वर्षों तक हम उसी में रहते हैं। और फिर धीरे धीरे ये शरीर जो है वो जैसे जैसे वृद्धत्व को प्राप्त होता है तो फिर मृत्यु में जो कहा जाता है कि बहुत कष्टप्रद होता है, तो उसका भी ध्यान करना चाहिए। बीच में जो है वो जब बुढ़ापा आता है तो अलग तरह के शरीर में समस्याएं शुरू हो जाती है, सारी इंद्रियां जो हैं वो एक तरह से शिथिल हो जाती है, तो उसमें भी दुख है। फिर बीच में भी जो शरीर है उसमें कई बार हम व्याधिग्रस्त होते हैं, व्याधि के क्रम में भी दुख ही दुख है। और ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जहां दुख का अनुभव हमें होता रहता है। तो इस प्रकार जो चीजें हैं जीवन में, उन चीजों में कितनी नकारात्मक चीजें हैं, वो इसलिए उसका चिंतन करना चाहिए क्योंकि उसमें आसक्ति ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर या जो जीवन है वो कोई व्यर्थ है या हम दुखमय जीवन को मानते, बिल्कुल नहीं। यह दिव्य परमात्मा की अभिव्यक्ति है, इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसे विकारवान और सीमित विषय में हमारी आसक्ति ना हो और हम महान लक्ष्य को छोड़कर इसी के पीछे न पड़ जाएं। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि इनके दोषों का भी चिंतन करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो आपको आगे बढ़ने में सहायता होगी। मुझे लगता है कि अगले क्रम में फिर करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हर ग्रेस स्वामिनी सद्विद्यानंद जी सरस्वती, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार। हरिओम। नमस्ते। झा साहब ने बहुत सुंदर हमें समझाया अर्थ क्या है। तो क्षेत्र क्या है आप देखिए, तो भगवान क्षेत्र हमें दर्शा रहे हैं कि इच्छा द्वेष, मानी कि क्षेत्र बाहर नहीं है, हमारे अंदर भी क्षेत्र है ही। क्षेत्र तो हमारे अंदर है, इच्छा हमारे अंदर है, द्वेष हमारे अंदर है। तो ये जो इच्छा राग द्वेष जो है, तो वही तो हमें ये जगत में व्यस्त रखते हैं। इच्छा को क्यों क्षेत्र भगवान ने दर्शाया? वो जैसे झा साहब ने दर्शाया कि वो हमारा स्वरूप नहीं है, लेकिन वही इच्छा जो है, वही राग द्वेष जो है, वही राग द्वेष इच्छा जो है, वो हमें ये जगत में बहिर्मुख रखती है। तो क्षेत्रता उसकी ये है कि वो हमें इतना बहिर्मुख रहती कि हमारी और देखने का हमें समय मिलता ही नहीं है। उतना ही नहीं है कि संघात, ये संघात शब्द हमें समझना चाहिए। संघात का अगर सीधा सीधा अंग्रेजी अगर हम अनुवाद करें तो उसको कहते हैं असेंबल्ड, जिसको अनेक अंग उपांग की जो विशेष रचना है, अंग्रेजी में अगर उसको कहते हैं। संघात मानी क्या है? तो संघात मानी के इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर टू सर्व अ पर्पस। यह संघात का अंग्रेजी की व्याख्या है, इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर टू सर्व अ पर्पस। हिंदी में कहे तो
सप्रयोजन बुद्धि पूर्वक की जो रचना है उसे संघात कहते हैं। तो मात्र ये शरीर संघात नहीं है, ये संपूर्ण जगत संघात है। आप देखिए, तो संघात के लिए योग में एक सूत्र है संहताना। ये जो संघात है, संहत उसका दूसरा शब्द है, समानार्थी शब्द है संहत, नाम परार्थता। तो ये जो संहत है, जो संघात है, वो संघात क्या है? परार्थत्व, पर मानी चैतन्य। तो ये संघात जो है वो अपने आप नहीं बन सकता है, अनेक अंग उपांग है। जैसे पुष्प आप लेंगे तो पुष्प के पंखुड़ी होती है, अंदर केसर होता है, उसका वज्र होता है, उसकी दंडी होती है, तो ये अंग है उनके। उसी प्रकार से हमारा शरीर हम देखते हैं वो संघात है। मस्तिष्क है हमारा, ये शरीर है, ये हस्त है, पाद है, तो ये संघात है। तो जगत की किसी भी वस्तु को आप देखेंगे वो संघात है, वो क्षेत्र है। आप देखिए, तो ये संघात जो है वो ये वैज्ञानिक लोग ये समझने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन ये संघात शब्द बहुत सूक्ष्म है। तो संहता नाम परार्थत्व, तो संघात जो है वो अपने आप नहीं बन सकता है, ये शरीर अपने आप नहीं बन सकता है। ये शरीर देखे, और शरीर में लीवर है, वो भी एक अंग है। अभी जो लीवर जिसको हम यकृत हम जिसको कहते हैं, उसमें भी अनेक प्रकार के कोष है। कोष अगर देखते हैं उसके भी अनेक प्रकार के उपांग है। तो जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे अंग उपांग हमें दिखते जाएंगे और वो विशेष प्रकार से कार्य करते हैं। लीवर जो कार्य कर रहा है वो हृदय नहीं कर सकता है, हृदय जो कार्य कर रहा है वो मस्तिष्क नहीं कर सकते हैं। तो ये संघात जो है तो उसको बनाने वाला होना चाहिए। अगर कोई कहे कि मैं स्विट्जरलैंड गया था और वहां पर्वत घूमने गए थे और वहां पर हमें ये घड़ी मिल गई, तो वहां ऐसे ही घड़ी बनती रहती है, ऐसा कोई कहेगा तो क्या मानेंगे? हम नहीं मानेंगे। क्यों? घड़ी जैसे दिखती है, जैसे ही घड़ी दिखेगी, हाँ किस कंपनी की? राडो की है, टाइटन है। आप देखिए, रेफ्रिजरेटर तो एक संघात है, तो उसकी कंपनी है, कंपनी मानी बनाने वाला, आप समझे। तो उसी प्रकार से ये शरीर है, तो शरीर को भी बनाने वाला होना चाहिए। परार्थ मानी को चैतन्य है, लेकिन हम तो नहीं, पिता ने तो ये शरीर नहीं बनाया है, तो किसने बनाया है? दूसरा, परार्थत्व का अर्थ होता है कि जिसके लिए बनाया वो भी चेतना है। इसलिए यहाँ पर भी जो झा साहब ने समझाया ना कि जो चेतना, जो जीव है, ये शरीर में जो रहने वाला जो है, तो उसके लिए शरीर बनाया है। तो बनाने वाला भी चैतन्य है, और जिसके लिए बनाया वो भी क्या है? चैतन्य है। आप समझो। तो ये क्षेत्र जो है, प्रत्येक क्षेत्र जो संघात ही है, इच्छा भी संघात। आप समझो, ऐसा मत मानना कि भौतिक वस्तु भी संघात होती है, इच्छा भी संघात है। क्यों? क्योंकि अनेक प्रकार हैं, उसके भी अनेक अंग उपांग है, अनेक प्रकार के अनुभव हमें होते हैं। तो ये जो संहत है, तो उनके लिए हमें चैतन्य की आवश्यकता है। और इसीलिए शास्त्र में ये वाक्य है, घटस्य कर्ता घटज्ञः, सर्वस्य कर्ता सर्वज्ञः। जिसने घड़ा बनाया, घड़ा अपने आप नहीं बन सकता, मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बनेगी, उसको बनाने वाला कुम्हार है, वो चेतन है। तो वो जो चेतन जो बनाने वाला है, उसमें ज्ञान भी है और कुशलता भी है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि स्किल और नो हाउ। उसी प्रकार से जो घड़े बनाने वाला है, उसको घड़े का ज्ञान है, माने कि घड़ा कैसे बनाना उसका ज्ञान भी है, और उसके बनाने की कुशलता भी है। अगर मैं पढ़ लूं कि घड़ा कैसे बनाना है 1 2 3 4 5 और बना चाक पर बैठ जाऊं, तो क्या घड़ा बनेगा? वो भारत का नक्शा बनेगा, घड़ा नहीं बनेगा। तो उसके लिए कुशलता चाहिए हमें। तो ये संपूर्ण विश्व जिसने बनाया है, उसके पास वो सर्व ज्ञान भी है और सर्व कुशलता भी है। और इसलिए हम कहते हैं, अब देखो, ये हमारे शास्त्र में ऐसा नहीं कहते हैं कि भगवान ने जगत बनाया। आप समझो, ये भगवान ने जगत नहीं बनाया, जिसने जगत बनाया वो भगवान है। इसीलिए शास्त्र में कहते यतो वा इमानी भूतानि, जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई, जिसने ये जगत का रचना की, जिसने ये जगत का जो पालन कर रहा है और जिसके अंदर ये जगत का लय होता है, उसे तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। तो हमारा शास्त्र ये नहीं कह रहा है कि भगवान ने जगत बनाया, हम कहते हैं कि जिसने जगत बनाया वो ईश्वर है, वो भगवान है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्ति है। और इसीलिए
भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से हमें समझा रहे हैं कि ये संघात जो है उसके बनाने वाला होना चाहिए, वो तो जड़ है। तो ये जड़ के लिए हमारा जीवन नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन चेतन के लिए होना चाहिए। जिसने ये बनाया और जिसके लिए बनाया जो जीव है और जिसने बनाया जो ईश्वर है, उनके चिंतन हमें, वो क्षेत्रज्ञ है, वो क्षेत्रज्ञ का चिंतन हमें करना है। ये क्षेत्र जो है, भगवान क्षेत्र की गिनती इसलिए कर रहे हैं कि उससे हमारा मन हमें हटाना है। और जो क्षेत्रज्ञ है, जिसके लिए ये जगत बनाया है और जिसने ये जगत बनाया है, वो जीव और ईश्वर की और हमारा मन जाना चाहिए। लेकिन ये ज्ञान जो है, क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान जो है, पिछली बार हम देख के गए कि जीव ईश्वर का ऐक्य यहाँ दर्शाया है, लेकिन ये ऐक्य का ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो ऐसे तो नहीं प्राप्त हो जाएगा। उसी के लिए किसी प्रकार के भी ज्ञान के लिए हमारे अंदर अधिकारित्व तो आना चाहिए। जो अधिकारित्व तो क्वालिफिकेशन, अगर कॉलेज में जाके मैं बोल दूं, मेडिकल कॉलेज में जाके मुझे यहाँ पर प्रवेश करना है, तो क्या वो मुझे प्रवेश देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए मेडिकल कॉलेज में जाने के, वो मेरे पास नहीं है। आप समझो। उसी प्रकार से ये क्षेत्रज्ञ परमात्मा से हमारा ऐक्य का ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है, तो भगवान यहाँ 20 मूल्य हमें दर्शाते हैं। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम। आप देखिए, आचार्योपासनम, शौचम, तो ये सब हमारे जीवन में आना चाहिए। अमानित्व, मान किसके लिए हम रखते हैं? कुल के लिए मान होता है, देह के लिए मान होता है, सौंदर्य के लिए मान होता है, ज्ञान के लिए मान होता है, तपश्चर्या के लिए, वैराग्य के लिए मान होता है, लेकिन वो अल्प है। हमारा ज्ञान कितना है? मैं हमेशा मेरे प्रवचन में कहती हूँ कि अगर आप शंकराचार्य जी जितना जानते थे, उनके सामने हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं है। 8 वर्ष की आयु में तो शंकराचार्य जी ने पूरे शास्त्र का अध्ययन कर लिया। 16 वर्ष की आयु में तो भाष्य लिख लिया था। अब देखिए, तो किस प्रकार हम मान रखेंगे? कोई मान की आवश्यकता नहीं। अमानित्व, अदम्भित्व, कोई हमारा जो गुण जो है, वो गुण के लिए भी हमें कोई प्रगटीकरण करने की आवश्यकता है ही नहीं हमारे। तो ये भगवान एक एक गुण हमें दर्शाते हैं कि ये गुण हमें हमारे अंदर प्रकट करने पड़ेंगे, हमारे अंदर ये गुण बनाने पड़ेंगे, निर्माण करना पड़ेगा। अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, शांति। अब देखिए, शांति मानी क्या है? शांति मानी कि हमारे अंदर वो सरलता आई कि नहीं, हमारे अंदर वो शांति है कि नहीं। शंकराचार्य जी भी कहते हैं, उसकी व्याख्या क्या है? किसी ने हमें किसी प्रकार से ताड़न कर लिया, किसी ने हमारा अपमान कर लिया, लेकिन हमारा चेतांसी न विक्रियंती, हमारे अंदर कोई प्रकार का विकार नहीं आए, अविकृत हमारा मन रहना चाहिए। आप आर्जव मानी सरलता। हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारा वर्तन जो एक लाइन में, अलाइनमेंट जिसको कहते हैं, हम सोचते कुछ है, हम बोलते कुछ है और करते कुछ और ही है, तो ये हमारे अंदर आर्जवम नहीं, अनार्जवम है। तो भगवान कहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। अखंडानंद जी महाराज जो वृंदावन में, वो बहुत सुंदर कहते हैं कि हमारे व्यक्तित्व का अगर निर्माण हमें करना है, तो पहले जो जो हमारे निर्माण में विघ्न वाले हैं उसको निकालना पड़ेगा। हिंसा को निकालना पड़ेगा, मानित्व को निकालना पड़ेगा, दंभित्व को निकालना पड़ेगा, तो ये अहंकार को निकालना पड़ेगा। ये सब जो गुण है हमारे व्यक्तित्व का निर्माण के लिए होता है। तो व्यक्तित्व का जब निर्माण होगा तभी ये ऐक्य का ज्ञान हमें हो सकता है। तो ये बहुत सुंदर है। आप स्थैर्य देखो, स्थिरता, हमारे अंदर स्थिरता नहीं है। आज ये पसंद आ गया, कल ये पसंद आ गया, कल यहाँ गए, कल वहां गए, कल उसको मिल दिया, तो हमारे अंदर कोई स्थिरता ही नहीं है। न बौद्धिक रूप से हमारे अंदर स्थिरता होती है, न इंद्रिय की दृष्टि से स्थिरता होती है, न मन की दृष्टि से स्थिरता है। तो स्थैर्य भाव हमारे अंदर होना चाहिए, स्थिरता हमारे अंदर होनी चाहिए। उसी प्रकार से आत्म विनिग्रह, हमारे व्यक्तित्व पर हमारा संपूर्ण प्रभुत्व होना चाहिए। और इंद्रियार्थेषु वैराग्य। देखो ये वैराग्य क्या है? लोग ऐसा मानते कि ये कपड़ा पहन लिया, तिलक बना दिया तो वैराग्य हो गया। ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य की व्याख्या क्या है? न तो राग होना चाहिए। 5वें अध्याय में भगवान ये देख करके गए। आप देखिए, ज्ञेयत्व नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जिसके अंदर राग भी और द्वेष किसी का प्रभुत्व नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब संसारी लोग होते हैं उसको सब प्रकार के राग रहते हैं। अब जब साधु बन जाते हैं तो उसके अंदर द्वेष हो जाता है।
ये क्या खा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? अरे द्वेष क्यों कर रहे हो? लोग तो इतना तक चले जाते हैं कि मैं तो धन का स्पर्श नहीं, और हम लोग भी ऐसा मानते हैं कि जो साधु धन का स्पर्श नहीं कर रहा है वो बहुत बड़ा है। अरे धन क्या है? वो तो एक कागज का टुकड़ा है, आप समझो। तो वैराग्य मानी क्या है? धन का स्पर्श नहीं करना वैराग्य है, भोजन का त्याग कर दिया वैराग्य है, घर का त्याग कर दिया वैराग्य है। वैराग्य क्या है आप समझो। तो किसी वस्तु के हाजिरी से हमें कोई विक्षेप नहीं है, किसी वस्तु के गैर हाजिरी से भी हमें विक्षेप नहीं है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, वो वैराग्य है, आप समझो। मानी कि राग द्वेष से हम ऊपर उठ गए हैं। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि when we are moving away from राग द्वेष, मीन के उसके ऊपर चले गए, प्रभुत्व हमें प्राप्त कर लिया है, तो वो वैराग्य है। अब तो वैराग्य इंद्रियार्थेषु माने कि इंद्रियों के विषयों में जो हमारा राग है, वैराग्य, द्वेष है, वो दोनों नहीं होना चाहिए। और अनहंकार, अहंकार किसके लिए अहंकार है? क्या अहंकार के लिए? हमारे कुछ नहीं, हम कुछ करते हैं, अहम करोमि इति अहंकार है, मैं करता हूं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ अग्नि देवता की कृपा इसलिए बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं दिक देवता की कृपा इसलिए आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं सूर्य देवता की कृपा इसलिए आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अब देखिए, तो ये अंग्रेजी में कहते हैं एप्रिशिएशन, यू एप्रिशिएट कि ये देवताओं की कृपा से ये सब हो रहा है, उसे अनहंकार कहते हैं। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, ये दोष देखना, आप देखिए बहुत सुंदर है ये। जब तक दोष नहीं देखेंगे ना, वैराग्य में दृढ़ता नहीं आएगी हमारे अंदर। द्वेष नहीं करना। आप देखो हमारे अंदर क्या है, गुण देखते हैं तो राग हो जाता है, द्वेष, दोष देखते हैं तो द्वेष हो जाता है। वो नहीं कह रहे हैं यहाँ भगवान यहाँ द्वेष देखने की बात नहीं कर रहे हैं। दोष देखना माने कि वो हमारे लिए योग्य नहीं है। जन्म हमारा स्वभाव है ही नहीं, क्योंकि जन्म मृत्यु जो है, व्याधि है, दुख है, जो हमें पसंद ही नहीं है, फिर भी हम उसे पकड़ के बैठ गए हैं। मेरा जन्म हुआ, आज मेरी बर्थडे है, आशीर्वाद दे दो माता जी, ये देखो मेरी मृत्यु होगी। तो ये सब जो दोष दर्शन हमें करना पड़ेगा। अनुदर्शन माने पुनः पुनः उसमें हमें दोष का दर्शन करना पड़ेगा। भगवान यहाँ शंकराचार्य दो अर्थ करते हैं। जन्म मृत्यु जो पूरा समास है, उसमें दुख भी उनके अंदर ले लेते हैं, या तो दुख को अलग कर दो। ये समास में दो प्रकार से शंकराचार्य जी यहाँ विभाजित करते हैं। तो समास का विग्रह जब करते हैं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दुख, ऐसा आप देखो, या तो दुख में भी अनुदर्शन मानी कि जन्म दुखम जरा दुखम, आप देखो जाया दुखम पुनः, ये सब दुख ही है जिसमें हम सुख देख रहे हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं अनुदर्शन मानी कि पुनः हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हमें सुख नहीं दे सकते, ये दुख ही दुख है। और इसीलिए और आगे जो है अशक्ति ही अनभिस्वंग है। तो आगे जब झा साहब करेंगे, बाद में हम भी विस्तार उसके ऊपर करेंगे। आगे चलते। ठीक बात है। तो आप लोगों की यदि अनुमति हो तो आज हमारे संत परंपरा को सम्मान देने के वास्ते, सम्मान देते हुए क्रम को थोड़ा सा बदल रहे हैं और स्वामी मित्रानंद जी महाराज को पहले बोलने के लिए आग्रह कर रहे हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार to everybody. Sound audible, sir? Clear? Loud and clear. Thank you very much. To attain the highest, there should be, like Mataji said so beautifully, qualification, eligibility. For us to be eligible to receive the divine, there are few things which we need to develop, and that is what Krishna calls it as that which we should know, jnanam, knowledge. If we can practice these values which are described, the 20 beautiful values, amanitvam, adambitvam, ahimsa, kshantirarchavam, these values if we practice, we become eligible. If something comes down, we can't receive. Like Ganga coming down, none of us can receive. A mind like Shiva is required to receive Ganga. A mind like Shiva which is in tapas, that can receive the knowledge which is descending down.
Similarly, for us to become eligible, what are the things we need? So this portion of Bhagavad Gita is very, very essential. It is such a beautiful portion that we can pick this up. And let us say the first one, Amanitvam. Be humble. My Guru, Swami Chinmaya used to say, humility is a strange value. The moment you think you have got it, you have lost it. It is such a strange value. The moment I think I have possessed it, that very moment I have lost it. Humility is not something which to go around saying I am very humble. Humility is respecting everything around. Respecting everything, seeing everything as His presence. And that way when we become humble, we are more receptive and we are more peaceful. So humility is one great value. Unpretentiousness, adambitvam. Unnecessarily we go on thinking, I am doing this is me. The ego starts dominating. We need to understand we are not the doers. Like so beautifully said just now, that who are we to do anything? Everything else is around. So if this doership in us has to go, we need to recognize that everything around us is so beautifully assembled. So that which is beautifully assembled, we are not the doers. In our presence, a lot of things gets assembled. All that we have to do is be grateful to God, to Him, saying thank you very much for making so many beautiful things run around me, and you have allowed me to hang around. I am not the doer. Lot of things have assembled around me and something so beautiful comes. So unnecessarily claiming this, I am the doer and I am this, I am that, that destroys us. We need to get this point very, very clear, that everything around us is so beautifully assembled by His wish, by His will, by His power. We are not the doers. If we recognize this, we will be grateful to Him, saying, thank you very much for allowing me to hang around and watch your beautiful manifestation, which you have so beautifully connected. Sutre Maniganaiva. That cord which runs around, connects everything. We would become very, very grateful that way. Ahimsa here is non-injury. We have no right to injure somebody. At the same time, this is a value, if it is not properly understood, there can be a lot of misunderstanding. Our ahimsa is, we do not initiate violence. We do not go and injure people. At the same time, if someone injures us, we should know to defend ourselves. The most important or the most important value, if you say, the basic value is, I have a right to live. My basic right is to live. That should not be snatched away. If someone is going to snatch it away, I should know to defend myself. So ahimsa here is, we should not initiate injury, but we should know to defend ourselves. And forgiveness. Subhashitani says, Shama Virasya Bhushanaha. Forgiveness comes from strength. It doesn't come from weakness. A strong mind, a well-developed, a person of strength, sees things happening around us which are okay, which needs to be forgiven. We should learn to let go. We would be more peaceful. Even today, if one can sit quietly for some time and say, these are the people who have disturbed my life, and those ulcers, those scars are still there, they should go, and those scars are impediment for me to grow. Those scars are impediment. If they are remaining in me, I cannot develop. Therefore, sitting in prayer, if we can let those scars go away, just by forgiving, we heal ourselves first. That kind of a mind only can sit quietly.
Otherwise, these agitations will come. Mind constantly goes that way. Arjavam, uprightness. And this is another value we should do. We should practice that being honest, being direct, being upright, not pretentious. And then he says, Acharya upasanam shaucham, stairyam atma vinigraha. Acharya upasanam. Serve the great teacher. Not the teacher needs our service. By being around with the teacher, we can transform. There is one way of transformation. When the teacher teaches from Vyaspeeth, we sit there, we listen, and we understand, we do Shravana, Manana, then we slowly evolve. There is another way. If we are hanging around an enlightened master, a Shrotriya and Brahmanishta, we pick up small lessons. How these people transact in the world. On a given situation, how Swami Vivekananda would respond. On a given situation, how Samartha Ramdas would respond. On a given situation, how Ramana Maharishi would respond. And then when we see them responding, we see them, this is what the Shruti also has said. They become a practical way of guiding us. So being around them, serving what they've asked us to serve, vision, work, etc., will help us, will inspire, will purify us. This way, being around a teacher transforms us. And then Shaucham, cleanliness, which is something again we need to understand. These are the values we need to highlight more even in our places of worship. Many of our places of worship, this value is forgotten. Cleanliness outside is important. Cleanliness inside is important. What do you mean cleanliness inside? Why am I dirty inside? What is that dirt I have inside? Inside, all that we need to negate is only one. If we have to ask, what is the distance between us and divinity? What is the distance between me and divinity? Generally, most of us would answer, it is within us. Where is the distance? Between the wave and the water, where is the distance? Accept it. But from that experience, for that anubhava of divinity, what is the distance? The distance between us and God is swartha. The distance is swartha. Selfishness is the distance. If the swarth can reduce slowly, through selfless seva, etc., if that reduces, that mind which becomes free from swartha is pure mind. Amrita Bindu Upanishad says the mind is of two kinds. Manohi dvividam proktam. There are two kinds. Shuddham, ashuddham evacha. Pure and impure. What is pure mind? Kama vivarjitam. And what is impure mind? Kama sankalpa. So that mind which is free from this selfishness is a pure mind. So committing to something selfless and continuously working that way, slowly, inside also we become pure. Shaucham happens inside, and that is very, very important. Stairyam atma vinigraha. And living life with that kind of self-control is very, very important. Like Mataji said so beautifully, that transcending likes and dislikes is sadhana, is vairagya, transcending. So when we live here with the right kind of a control, we will slowly transcend the likes and dislikes. The moment we can manage to do that, we take a great leap in our spiritual path. So if there is a sufficient self-control, sense management, if we learn, we will have this way of life. This way, all the other 4 verses also which talks about, if we can start practicing them, we qualify. Now, one thing for a beginner would be very, very difficult. Saying 20 values to practice,
forget it. Take one value at a time. And let us practice it this way. Let us say we practice amanitvam. Next 3 days, let us practice only amanitvam. I need to understand not jnanam, by vijnanam, by my direct experience, what is being humble. What is to practice amanitvam. What is to experience amanitvam. So next 3 days, if we can commit ourselves only for one value, we would have an experience. It becomes wisdom, not just knowledge, it becomes wisdom. Once that kind of a gaining we have, then we move to the next one, adambitvam. And then we go into ahimsa. Each value for 3 days, one at a time, 3 days. If we can do this way, in 3 months' time, if we put sincere effort, we would be heading towards being qualified to receive this knowledge. Thank you. जी, नाडकर्णी साहब, स्वागत है आपका, नमस्कार. As usual, beautiful discourses, beautiful ideas by fellow panelists. I will only take a slight spin on what Swamiji just now said about concentrating on one goal or one element at a time. This is something that occurred to me when I was first being led into this chapter with my late mother's guidance. And she told me a day has 24 hours. So 24 elements that constitute the field of activities ऐसे सोचिए आप. तो पंच महाभूतास पहले आ गए, 5 gross elements, पंच तन्मात्रास आ गए, taste, touch, smell, 5 working indriyas, senses आ गए, voice, hands, legs, etc. Then knowledge senses, ears, eyes, tongue, skin, nose, mind, intellect, ego, prakriti. Now prakriti was the last one, the primordial form of all this material energy, which is all imbued by the divine. So if you concentrate on understanding or being in tune with one element for 1 hour, your whole day probably spent in this sort of manan, chintan, dhyana and action, mindful action, you might start observing great changes. Now, the second thing that was emphasized to me by my dear mother was that she referred me to read the Jnaneshwari to see one quality जो है, अमानित्व जो है, absence of pride. उसके लिए उन्होंने, she read out to me verses from the Jnaneshwari to show how does this look in actual action. तो गजबजोल आगे कैसा, व्याघ्रे रुंदलाम रुगु जैसा. So a person who is filled with this quality of lack of pride, when he starts getting praised, he starts feeling agitated like a deer that has been stalked or hunted down by a tiger. Then he says, to add to that simile, he says, he feels as if he is drowning in a whirlpool. So what does he do? Chaturya lapavi, mahatva haravi, pisepanamiravi avadoni. So he hides actively his chaturya. He goes away from mahatva, and then he behaves like a dunce, maybe like the Zen master who looks like a fool, but who is actually a great Mahasiddha. And to reinforce these values, I was given beautiful stories, which I had the great privilege of passing on to my daughter when she was a child. And she just loved these stories. One of the stories that showed this amanatva quality is that of Hanuman and Bhim. So
भीम महाराज को अपने शौर्य पर, अपने सहस्त्र हस्ती बल पर बहुत एक बार उन्माद आ गया, और when he's moving around and bullying Brahmins who are not eating properly at the Rajasuya Yajna and all that, they feel the Brahmin, they pray to the lords, and वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम जो है हमारे उनके बड़े भाई, he decides to teach a lesson to his younger brother, who has now suddenly become a little puffed with vaingloriousness. So he takes the form of an old Jarjar monkey with his tail, and Bhim जब आ रहे हैं तो बोलते हैं, अरे यार मेरी, why are you blocking my way? Get lost. He says, I'm so old that I'm not able to move my tail. तो पहले वो अपने गदा से ट्राई करते हैं, अपने जूती से करते हैं, हिलता नहीं है, फिर एक हाथ लगाते हैं, फिर दो हाथ लगाते हैं, फिर पूरी शक्ति लगाने से भी एक कण भी नहीं हिलता है. तो then he realizes that this is not what it seems. And then his pride is brought down, and this lesson that the Lord has given to his Parama Bhakta is repeated by the great Anjaneya to his younger brother. It is wonderful to have strength, but remember always that you have not to be, to be destroyed by pride. And when you get this strength, and when you get this inner illumination, there is this quality of stairyam, So, stairyam cha angalagavam is also a quality that is predicted in the Hatayog Pradipika by Swatwaram Muniji. Stairyam cha angalagavam. So, the body also becomes smart, chapala, Vatatmajam Vanaryuta Mukhyam, Shriram Dutam Sharanam Prapadde. So, वो जो अंजलि मुद्रा लेके वो भाव में खड़े होते हैं, that quality of Hanuman is the quality that we must cultivate in us, was the counsel that I got from my dear mother when I was growing up in her lap. And then she also told me this Mahakavya of Kiratarjuneya also, on which a family Pandit in Karnataka had created a beautiful commentary called Kukke Subramanya Shastri. And Kiratarjuneya, baby, you see Shiva himself as Kirata, and Arjuna, who's Kshatra Tej incarnate, is confused. He is not able to recognize the Lord. तो उसके लिए उनका फिर वो जो सम्मोह है उसमें, then there is this clash between Shiva and Arjuna. But again, Arjuna is smart enough to recognize the divine strength and the divine power in his opponent, who looks like a hill tribe person. Kirata, भील के जैसे दिखते हैं वो. And माता जी भी उनके साथ हैं, माता पार्वती, वो भिलिन के वेश में है. And she smiles, because of course Arjuna also is a great hero. And what was emphasized to me is that even when he's pounded into the earth, he does not lose his sense of purpose, and there also he remembers the Lord. And then with his shattered chin, he gathers the mud and makes a little linga and draws. He's not able to get up, he's not able to move his great limbs. This Mahabahu that the Lord extols in the Bhagavad Gita, he is not able to move an inch. तो अपने दांतों से वो बिल्व पत्र लेके डालते हैं, and that बिल्व पत्र goes upon the head of the Kirata, and then he gets this Anandashru. And he says, oh my God, what have I done? But this was a test. This was a test to see whether he had the gravitas and the yukti and the shakti to bear the force of Pashupata. That is inhuman, that to bear those divyastras, to bear that jnana prapata, you need to be really extraordinary. And it is through the cultivation of these qualities that are given to us in the verses next. This
mana prasada saumyatvam maunam atma vinigraha. Why do you need atma vinigraha? Without that, you will not be able to make your body strong enough to bear the force of knowledge that is being transmitted here in this Divya Upanishad. I shall wait for my turn for next Vivarchana. Thank you so much. बिल्कुल ठीक बात है। भाटे साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। Namaskar, namaskar. One of my, because I live in America, one of my very much concern, very dear to my heart, is how do I take all this knowledge and wisdom to the younger generation. And by that, I mean not only the younger generation in India, but also the younger generation, हमारे बाल बच्चे जो अमेरिका में पैदा हुए, वो तो कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में, तो उनके पास भी ये पहुंचाना, that is also my concern. And so I like to attach this entire discussion, borrowing it from Bhagavad Gita and Jnaneshwari also, and connect it with the Western philosophical ideas, which are parallel, which I find parallel, and that I think is an important exercise that I do, because our friends, हमारे बाल बच्चे जो अमेरिका में पैदा हुए, वो तो वेस्टर्न फिलोसफी जानते हैं, वो तो इंडियन फिलोसफी के बारे में बहुत थोड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं शायद जानते. So उनको अगर समझाना है तो I have to take recourse to some of the ideas. Not, however, we have to keep in mind that the Indian philosophy is extremely broad, and it is at a much it goes up to a much higher level. So only at the elementary level we can take help from the Western philosophy, because the Western philosophy as such is very limited in the sense that it is mostly intellectual philosophy, while भारतीय तत्वज्ञान जो है उसमें अध्यात्म भी है, और अध्यात्म तो इंटेलेक्चुअल प्रवेश से भी बहुत ऊंची जगह तक पहुंचता है, ऊपर उठता है. So that of course has to be we have to bear in mind. However, I like to attach at least the elementary level with some ideas in the Western philosophy. Now, in Western philosophy, there is a very important branch which is called physicalism. And what it means is that everything in this universe is connected with the Bhautik, with the physical, and that is physicalism. Even all our actions that we perform with our body is of course physical, no doubt about that. But even the mind, which deals with the thoughts and thought processes, etc., is also considered physical. And because according to the Western view, it arises all due to the actions and reactions that are constantly being performed by neurons within our brain. So ultimate source of the mind and all our thought processes, all our emotions, and everything is again attached to the physical activity. So that here is being expressed as kshetra. And that is how, as you can see, Panchamahabhutas are physical and they are included. But along with that, we also have, one second, let me bring it up on my other computer. Yeah, so the elements, and then the I consciousness. Now, I consciousness, meaning here ahankara, but that should not be attached to abhimana. It is just the knowledge that we exist. Aham, I exist. That kind of I consciousness, understanding. And even here in the kshetra, in the Bhagavad Gita, avyakta is also included, which is unmanifest. So manifest is a part of kshetra, but whatever is unmanifest, avyakta, is also put into the category of kshetra. Then the 10 senses, the mind, the 5 objects of the senses, tanmatra, the perception, activities, etc., they are all included. Then desire, hatred, pleasure,
pain, and the aggregate. The aggregate Sanghata, Swamini has already explained in detail what is the meaning of Sanghata. Now, in a modern perspective, we call it, because I happen to be a professor of systems engineering along with computer science. So, you see, when we consider a system consists of many, many components. It is a combination, but a working combination. Each component within the system is connected with another component in such a way that performance-wise, they are all together. They all act together, and their individual connections between them are also important, and that is how the entire system operates. So that is my rather Western philosophical interpretation of the word Sanghata, which Swamini ji has already explained to us. So that is the aggregate. Then the intelligence and the fortitude. This being stated is the field. Now, for Kshetra, I'm using here the word field, and together with its modifications. So this is the definition of the field that is given to us in shloka number 5. And then I'm just scrolling down. Fortitude was the last element. And I would define the word fortitude as a state of mind by which the depressed body and the mind are upheld. It is also material in nature, for it is an object of knowledge. We know that we have fortitude, and so whatever is an object is different from the subject, obviously, and so that is also a part of Kshetra. One is conscious of its presence or absence, etc. So this is explained in shloka number 5 and 6, and then we go to shloka number 7. So before that, shloka number 5 or 6, all the contents, there are two things that I would like to mention. They go hand in hand with the elements that are mentioned in Sankhya Darshana. You see, exactly. So Prakriti, Sankhya Darshana talks about Prakriti and Purusha. So the elements that are mentioned in Prakriti are the same elements mentioned here in Bhagavad Gita in this chapter. And they also have a complete parallelism with the philosophy of physicalism in Western philosophy. So these two parallelisms I wanted to mention. Right. When we go to number 7 to 11, there we find that this is again talking about the Western philosophy. This is again what I would like to call spiritual ethics. So these are the qualities that we need to inculcate if we want to progress on the spiritual path. And so I would identify that as ethics, but ethics again in Western philosophy is a very broad area. You know, all kinds of ethics we can talk about. There is also business ethics, which I have taught as a professor. And when I was a chairperson of a Department of Business Management, I have taught business ethics also. So not that kind of ethics. Here we find spiritual ethics. So this ethics is a part of the entire body of ethics, which is necessary to be inculcated within us if we want to progress on the spiritual path. So this is spiritual ethics. And that includes humility, modesty, non-violence, forbearance, uprightness, service to the teacher. Now again, service to the teacher is a very, very loose term. What is meant here is service to the guru. So, you know, these English words have only a limited meaning because teacher is too small a word. No. What I mean is the teacher who provides us spiritual knowledge and puts us on the spiritual path and also guides us to make progress on the spiritual path. That is the kind of teacher to whom we have to show respect and to whom we have to serve. And because only by way of serving such a guru that we can obtain
knowledge and wisdom from him. So again, I just used the word him, but a guru can be a woman or a man, either way. A guru is a guru, that's it. So service to the teacher. Then purity, shaucha. Shaucha is the Sanskrit word, which again, no, purity is not a correct translation again, because shaucha involves purity of the mind, purity of the body, purity of the actions, well, all kinds. So all these characteristics are included when we use the Sanskrit term shaucha. Well, I need to thank Jha Sahab, because he translated the Constitution into Sanskrit, because I love Sanskrit tremendously, because you see these finer nuances which are present in the meanings of Sanskrit words. They are not available in other languages, and they are not available in English or French or German or Russian. I know all these four languages, and that is why I know. While I was teaching on the faculty of IIT Bombay, there was a facility available to us, to students as well as faculty members of the IIT, to learn. Of course, English we knew, but to learn French, German, and Russian. And I know all these three languages very well. But let me tell you, the beauty of Sanskrit and the deep meanings of Sanskrit words, especially the Vedic Sanskrit, the words are extremely deep. And that depth is not available in the meanings of words in any other languages. So anyway, where was I? Purity, steadfastness, and self-control. Now, self-control is again, well, one has to have control on one's actions, one's emotions, and the emotional control actually plays a more important role compared to the physical actions, the control over the physical actions. So there is much to talk about here, but I'm just using just one word, self-control, that's it. Then dispassion towards sense objects. Now again, you see, dispassion is not still the correct word. You see, sense objects are going to be there. And there is nothing wrong in enjoying something that comes by way of perception of the sense objects. So for example, I like to eat ice cream. Okay. And the way I enjoy eating ice cream is eating, right? So if I say dispassion towards sense objects, does that mean I should not enjoy the ice cream? No. What it means is that I can eat ice cream, I can enjoy it perfectly well. However, I should never have a craving for the ice cream. I should never feel like people who smoke, they develop a craving. People who drink heavily, they develop a craving. Oh, I need to have a cigarette. I need to have a cigarette. That kind of craving is what is being talked about here. There is nothing wrong in enjoying good food. There is nothing wrong in having entertainment and enjoying it. The only question is that, do we have craving for that? No. That is what is being mentioned here. So that is the kind of dispassion that is meant here. Absence of ego also, one can be rightly have abhiman that one has a doctorate, one has done so much research, and having that feeling is not wrong, but one should not be showing it in public. And there is again, let me come back to a Sanskrit word. Garva is a Sanskrit word for which I don't find a suitable English translation. But garva nahi hona chahiye. Just a feeling of one's position, one's knowledge, one's wisdom, whatever knowledge one has acquired by actually studies and doing research and being aware of that awareness is not wrong. But uska garva nahi hona chahiye. That is what is being meant here. And so absence of ego is interpreted in that way. Then perception of the evil and birth, death, old age, sickness, and pain
Well, these are the things we always face in our daily life. So that perception should not bother us. Then non-attachment, non-identification of self with children, wife, home, and the rest, etc., etc. That doesn't mean that I should not love my wife. But one should not be developing an extreme amount of attachment. That is what is being meant here, and non-attachment, non-identification, etc., and then unvarying evenness of mind in the midst of agreeable and disagreeable events. So one should not get bothered if somebody insults, Time is or over, one Bhate should sahab. not. Time is over. So this is my rather westernized interpretation of the what is being said in Bhagavad Gita, and I personally believe that this way of approaching I can reach up to the younger generation more closely. So thank you. That's great. दरबा साहब, स्वागत है आपका. नमस्कार. मुझे लगता है आज एक ही राउंड हो पाएगा. Hari Om. Yeah, Hari Om Namaskar. A pleasure, what a blessing to be born in this Sanghata, in this assembly and the aggregation of the people and the pious land called Bharat Bhumi, first of all, and to be blessed with the invaluable, infinite knowledge that we are blessed with, and particularly Bhagavad Gita. And what a pleasure to be in the Sanghat, in the assembly, and the kind of the elite learned panel who are altering their thoughts and listening to them. And I have always said that being a last speaker, I have the advantage of carefully listening to all the previous speakers and then and my thoughts, and then to share and come up with, if possible, some unique perspective that which is practical. Being a student, a practitioner, manager, and a professor of management, naturally, my exposure has been in the last 35 years uh, around the Western theories, concepts related to the personality development, personality ethic, and the characteristics of success and then winning and material success. So there were several scholars and psychologists and then management gurus, like starting from like let's say Carl Rogers, Kurt Goldstein, Lloyd Abraham. There are several people, like Alton Mayo, Taylor. We have and B.F. Skinner, behavior modification. So there are several people who taught us, how they around the personality and leadership motivation. When I'm looking at it and then at a mature outlook at this stage and then age of my life, having gone through all that and also doing research through thesis that I have, and also getting into academics today. So more and more, I'm getting really, excited, elated, absolutely exhilarated and enthused about the divine wisdom of the Bhagavad Gita. When we look at it, without repeating all that has been said today by Bhagavan, there are, like I was working in, and there was a term called Nifty 50. Like that, we have Lofty 50 here today. The Lofty 50. There are 24 elements which are 24 significance in our as much as 108. 108 today is the 108th episode. So Mala में 108 beats होते हैं. So like that and all 9 and things like that. So the significance for this episode also, and then happy to be in the August Assembly Sanghata of learned who arranged here by Sharma ji through INSE. आज आपके इंटरनेट के संघात में प्रॉब्लम आ रही है. Oh. So is that not able to
ये listen is संघात it? जो है वो पूरा ठीक से बैठ नहीं रहा है, ये घात है, ये घात कर रहा है, घात हो रहा है, घात कर हाँ रहा है। अपघात हो रहा है, घात कर रहा है, फिर भी so 24 plus एक बार वो ट्राई 20, कर लेते हैं, you know, कंटिन्यू रखिए, ट्राई करते हैं। I see. So shall I continue or what? Yeah, you continue. We'll check Yeah, okay. another time. Okay. Otherwise, yeah. Yeah, fine. So I think there is a shutdown coming in here, internet maybe. Anyway, so this is a great, topic for us. We have been blessed and living here, access completely to this Indian knowledge system and the Sanatan. And with this 50, and of course more than when we come to the 16th chapter, in the first 1, 2, 3 shlokas, there is something called, which I have called the special chabbis. So, I've named it as a special chabbis and conducted several corporate programs around the chapter 16, 1, 2, 3 बहुत सारे लोगों को So similarly, ये जो 26 बोल रहे हैं, इसका मतलब व्यूअर्स के लिए भी बता देते हैं, ये एक फिल्म है जिसका जिक्र I know, special. नहीं, आप तो जानते ही हैं, आपने तो मेंशन किया ही है, व्यूअर्स के लिए बता रहे हैं। स्पेशल 26 जो है एक फिल्म है अक्षय कुमार की, उसमें वो एक अजीब सा कथानक है वैसे तो, लेकिन ठीक है, आपने बोल दिया है, कोई बात नहीं जी। Correct. So I'm just saying Super 30, Special Chabbis, like that, Lofty 50. So these are the names, catchy words, for corporate training we have used. I have used for the training. So there are 24 elements, all that have been already, shared, and there are 20 virtues, bolo, personality characteristics, bolo, whatever you may say. So there are all principles which are absolutely, I have said several times, and all of us have shared that Bhagavad Gita has been a manual, practical manual. So ये सब Western, the concepts that I have then shared and trained people, इतना कम पड़ जाते हैं when compared to these of special chabbis, the special qualities, the 26 qualities in the chapter 16. So these are around that, I think, when we focus and then apply, study them, understand them, study them and apply them in our day-to-day life, it is possible. Like, for example, of course, all the panelists have shared and dealt with it, all the 20 virtues which are enlisted from Amanitvam too. But if you look at it, when I am looking at it from carefully, from closely, each one of them 20 are interconnected and then corollary to each other. So once you have humility, you will not have hypocrisy. Once you have non-violence, you will be very forgiveness. And when you have simplicity, you will have service of the Guru, and then the humility with that, with humility. Darbha sahab, hold your thoughts for the next episode. Oh, but move to not working properly. This thing, no? Yeah. So आज इसको आप जो भी रह गया है बाकी वो नेक्स्ट एपिसोड में हम ले लेंगे, क्योंकि अध्याय तो वो 13वां ही चल रहा है, तो कोई खास बात नहीं है। और स्वामिनी जी कुछ कहना चाहती हैं? पहले आप कह लीजिए, हमारे पास थोड़ा सा समय है, एक मिनट में आप कर लीजिएगा जी। नहीं, एक वाक्य बोलना है कि आपने 6 से 10 लिखा था ना श्लोक का, लेकिन आज नहीं हुआ है, तो अगले सेशन में 9, 10, 11, 3 करेंगे, क्योंकि एक जो सद्गुण है उसको समझाने में समय लगता है। बिल्कुल लगता है। तो अगले सेशन में 9, 10, 11 श्लोक रखेंगे। राइट, अग्रीड। तो दरबार साहब, आपका जो रहेगा वो नेक्स्ट वाले में कर लेंगे। हमारे पास थोड़ा सा समय है, 1-1.5 मिनट में आप एक नेक्स्ट राउंड करा ही लेते हैं। तो झा साहब कुछ कहना चाहते हैं तो कह लीजिए। नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, क्योंकि आज बहुत अच्छी व्याख्या हुई है सबकी। तो इतना ही कहना है कि अपने यहाँ वेद से लेकर आचार्य की परंपरा रही है, और आचार्य का वही एक दिव्य स्वरूप रहा है, जिसकी हम आध्यात्मिक दृष्टि से जो हमारी कल्पना है, तदनुरूप ही आचार्य शब्द का अर्थ लिया गया है। और बाद में फिर श्वेताश्वतर उपनिषद में गुरु शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जो यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्ये ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मा। तो कहते हैं कि देव यानी उस प्रभु में जैसी हमारी निष्ठा है,
वैसी ही निष्ठा यदि गुरु में हो तो फिर उस परम तत्व का जो अर्थ है वह अपने आप प्रकाशित हो जाता है। तो यही जो हमारे स्वामिनी जी और जो स्वामी मित्रानंद जी जो कह रहे थे, जो केवल आचार्य या गुरु, जब हम इन शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा वही तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्तित्व जिसके एक एक कार्य मात्र से, शिक्षा तो एक अलग बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व के एक एक जो क्रियाकलाप है उससे हम सीखते जाते हैं, उससे हम आगे बढ़ते जाते हैं और उसी के आधार पर हमारा व्यक्तित्व विकसित होता जाता है और अंत में हम धीरे धीरे कैसे उस दिव्य तत्व तक पहुंच जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। वस्तुतः पता हो, ये प्लानिंग करके तो ये सब होता नहीं है, ये सब तो अपने आप रिवील होता है। तो वो रिवील कैसे होता है? तो गुरु और आचार्य के सानिध्य में ही रिवील होता है। तो इसीलिए इसका अपने यहाँ बड़ा महत्व है। और बाकी ये शिक्षक या टीचर या प्रोफेसर, इन शब्दों का ट्रांसलेशन करने से ये सारी बातें बदल जाती है। इसीलिए उसको मुझे जो अपने भाटे साहब हैं उनसे भी निवेदन है कि आप जब ट्रांसलेशन ना किया करें जो टेक्निकल टर्म, उसको अंग्रेजी में इंटरप्रेट करें। तो इंटरप्रेट करना एक चीज है और जब हम उसको ट्रांसलेट कर देते हैं तो पूरा का पूरा हम सेमेटिक अंडरस्टैंडिंग या वर्ल्ड व्यू वहां ला देते हैं, जिसका इस अध्यात्म से दूर दूर से कहीं भी कोई नाता नहीं है। और ये हम सभी जानते हैं। और दूसरी बात जो एक मिनट में कहना चाहता हूं कि भारत जो है वो आत्म केंद्रित पूरी ज्ञान परंपरा है। इसीलिए क्षेत्र जो है, और क्षेत्रज्ञ की बात की है भगवान ने, और बाद में कहते हैं कि ईश्वर और क्षेत्रज्ञ में भगवान कहते हैं कि मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। तो इस बात को भी हमें ठीक से जानना। ये जैसे जो शरीर है या पूरी सृष्टि है उसका कैसे विस्तार हुआ है और किसके लिए विस्तार हुआ है, इस बात को समझना बहुत, यदि कोई समझ ले और दिव्य पुरुषों के सानिध्य में रहे तो वो उस स्तर तक पहुंच जाता है। एक जगह तो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि वस्तुतः आत्मा जो है, जब बहुश्याम प्रजाएं हम कहते हैं शास्त्र में, तो वस्तुतः आत्म विस्तार जो है एक तरह से अपने लिए ही है वो, कि हम श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवति। भगवान कहते ऐसे सब मैं कर रहा हूं, इन शरीर का, इंद्रियों का, बुद्धि का विकास जो है वो वस्तुतः स्वयं के द्वारा स्वयं का सेवन करना, विषय को प्राप्त करना। तो इस दृष्टि से हम यदि देखें तो भारत का जो अध्यात्म है, भारत का जो वो आत्म केंद्रित जो पूरी ज्ञान परंपरा है, उसका वेस्ट से कोई पैरेलल नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत हम बताने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यही बात है। बाकी 9 से 11 जैसे स्वामी जी ने कहा वो अगले एपिसोड में उसको करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? The word detachment, asakti, it comes in the Gita. I mean, the concept of detachment comes at least 80 times. So all that what the Lord is trying to tell us is have, don't own. Have it, don't possess it. If that art we learn, we have established a knowledge to play with the Kshetrajna. Kshetra, to play with the Kshetra. Right, sir. That's it. बिल्कुल ठीक है। Anybody else? भाटे साहब कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं, झा साहब का एडवाइस तो ठीक है, मैं भी वो जानता ही हूँ, आई एग्री विद दैट। वन लिटिल थिंग, एक मिनट पहले भाटे साहब कंप्लीट कर लें, नाडकर्णी साहब जी। हाँ, तो क्या है कि इसी भगवत गीता में हमको क्या करना पड़ता है। व्हेन आई टीच भगवत गीता, इट कैन बी टॉट एट डिफरेंट लेवल्स, और एक तो लेवल बहुत ऊंची तक पहुंच जाती है, दूसरी मीडियम रहती है, और फिर यहाँ अमेरिका में तो लेवल तो बिल्कुल नीचे होती है।
और इतने नीचे लेवल तक जो आदमी सोच विचार कर रहे हैं उनको समझाना ये भी बहुत कठिन बात होती है. So that is why I have to take recourse to using some of the Western concepts. Right. Nadkarni sahab? My contention is on this very point. एक लाइन सिर्फ मैं बोलना चाहता हूं कि मैंने ये कहा भाटे साहब कि टेक्निकल टर्म्स का ट्रांसलेशन ना हो. वेस्टर्न कॉन्सेप्ट लाने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने जो उस टर्म को इंटरप्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन यदि करते हैं तो समस्या होती है. ये सिर्फ Okay. What I wanted to say was, Bhate Sahab particularly and Jha Sahab will also, and I'm referring to this, a very beautiful book by a revolutionary author called Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed. उधर उन्होंने एक कहा था कि there is a banking model of education which thinks of the student as an empty piggy bank जिसमें हम knowledge डालते हैं. But fundamentally, the pedagogy of enlightenment that we are accustomed to says that you are divine, Tattvamasi. It is that we are enabled to realize the divinity that is within even the lowest level aspirant. You are right, there is a adhama, madhyama, uttama, ati uttama kind of gradation of prakrutis and guna pravrutis. But the fundamental difference is that idam sarvam brahmam, that everybody, including a little grain of sand, is imbued with the divine. When we start from that kind of respect, inherent respect towards the entire sheath and envelope, I think we are into a different dimension. That is my submission. Thank you. दरबार साहब 1 मिनट आप कह लीजिए. Okay. To sum it up, starting from Amatvam to Avya Vicharini Bhakti, only if we take two, I think it's to sum it. A simple person and then pride, and then starting from unwavering, complete devotion and then attention to the divine, I think will give us this Adhyatma Jnana, which gives us the Atma Anatma Viveka, and also the material Jnana to understand the Shad Vikaras which are to avoid, and all the remaining lofty 50 to be applied in our day-to-day lives. There is no other practical manual which I found, having studied those motivational and psychological concepts also, and that is our great boon, and then we are blessed in that way in India, and to discuss in this August gathering also. Thank you. तो आपने सुना, ये हैं हमारे साथ प्रोफेसर श्रीमान रामनाथ जी झा, हर ग्रेस स्वामिनी सद्विद्यानंद जी सरस्वती, हिज ग्रेस स्वामी श्री मित्रानंद जी, और श्रीमान विठल जी नाडकर्णी, प्रोफेसर श्रीमान अनिल जी भाटे, प्रोफेसर श्रीमान श्रीराम जी दरभा. आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार. तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम गीता उपनिषद जिज्ञासु की दृष्टि में. आपने हमें ज्वाइन किया, इसलिए आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार. आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस. थैंक यू सो मच.